Hello and welcome everybody. We are here with the cast of a film that sounds incredible if you just go by the trailer, क्योंकि picture तो हमने देखी नहीं है. Picture का नाम है शिव शास्त्री Balboa and I have with me all the diggajas in the film. Right? I have Anupam sir with me. I have the director Ajayan, who is the quietest, softest speaking so far. Then, not at all. Not at all. He is saying this ऊंची बुलंद आवाज में. We have Sharib with us, we have Nargis, and no one needs an introduction. Acha, first things first. This was your idea, ना director साहब? हाँ, I would assume so. या मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ये idea दिया हो. ये, how did this idea come to your head? Let's make a movie about a non-ageist movie. There's a lot of this personal story in this film, and then I got Mr. Kher Saab I convinced him to play the role, and now we have the film coming out on February 10th. Yeah. Kher Saab He ने didn't need to convince me much. He just narrated me one line, and I thought that's fascinating. And when I read the script, I immediately called him up and I said, "We are going and doing this film." And it was COVID time. We shot the film in COVID time, and then we were lucky to have Nina and Sharif and Nargis in the film. There are certain films which resonate with you as a person also. आपका शो रोशी हिंदी में या अंग्रेजी में? दोनों. आप आराम से तसल्ली से. मेरा जबड़ा दर्द करने लगता है, मैं ज़्यादा अंग्रेजी बात करता हूँ. आप हिंदी में बात कीजिए ना, फिर मैं इंग्लिश में बात कर लूँगी. हाँ, तो बहुत कम फिल्में, और खासकर इस एज में, जब मेरी पर्सनल थॉट ये है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि अब आपको वेटरन बोलना चाहिए, अब आपको लेजेंड बोलना चाहिए, अब आपको थेस्पियन बोलना चाहिए, फिर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देना चाहिए, फिर आप सनसेट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. मैं उससे कोसों दूर हूँ, मैं उससे सालों दूर हूँ. तो ये मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस है. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दोस थिंग्स. फिर जब ये कहानी आई, जो वही कहानी है जो मैं अपनी जिंदगी में सोच रहा हूँ, तो फिर इससे तो सोने पे सुहागा वाली बात है. तो फिर तो करना इसका जरूरी था. इट्स अ स्टोरी ऑफ happy people in unhappy situations, but they remain happy. That's amazing. It's a spice of life film. Right. It's an adventure film. It's a film not about sadness कि भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, sadness है, मैं रिटायर हो गया हूँ. वो अपने ढूंढता है अपने अंदर के हीरो को. हम सबके अंदर हीरो है, और हम जैसे जैसे जिंदगी जीते हैं उस हीरो को भूलना शुरू कर देते हैं. हम ऑर्डिनरी के ऑर्डिनरी रहते हैं, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के चांसेस बहुत होते हैं. And all your life, right? Like it's not कि आप एक certain age पे पहुंच जाते हैं. I have lived my life in an extraordinary manner. Yes. I come from a small town. My father was a clerk in the forest department. I went to drama school. I was 28 when I played a 65-year-old. Yes, I was just getting I broke this myth of typecasting. Yes. I was Hindi medium school guy who has worked with all the top Hollywood directors. Yes. I'm nominated in BAFTA. I'm not going to give you a biodata of myself, but I'm trying to say that I try to tap on the extraordinary possibilities because I don't have the fear of failure. That's amazing. I think it's the passion that you feel for what you do, right? And everything I feel should be driven with passion. Acha, this is going to be like a little bit of a digression, but you were studying at NSD, है ना? Yes, बिल्कुल. NSD के पास क्या खाते थे आप? What do you recommend for people to be in Delhi and eat? Oh, Nathu Sweets, Bengali market. Bengali market. या हम कल गए थे. क्या खाया हमने नरगिस? नरगिस हिंदी में बताएंगे. छोले भटूरे. Yes. Oh. और क्या खाया? और do we have chaat? Yes. Or samosa? Yes. Or I don't know what else did we have? That's all I had. कुल्फी आपने नहीं खाई? अभी कार में इन्होंने छोले भटूरे को छोले भटूरो बोला. वो छोले भटूरो कहाँ जा रहे हो? Okay, so she's well fed and she's had desi khana, and that's amazing because NSD के साथ तो पास तो कमाल का बंगाली मार्केट में. Triveni is so good. हाँ, त्रिवेणी बहुत अच्छा है. पराठे, आलू के पराठे वहाँ के, मतलब और थोड़ा इस तरफ को चले जाओ तो आपको पान की दुकान भी वहाँ पर है हमारे. मैं सबसे उधार लेता था. Seriously? सबका उधार. और फिर मैं लंबा चक्कर काट के जाता था. फिरोजशाह कोटला में फिरोजशाह रोड से जाता था. I used to borrow money. No, not borrow money. I used to, उधार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? Borrow. No, उधार नहीं. उधार मतलब हम Take. पैसे बाद में देते. I just used to take it and never give it back. So you accumulated debt. That's hardly debt. I mean, you're asking. I used to owe people. You owe people. And I remember that. So don't take me on that journey because that's the most beautiful journey. है ना? Yeah, amazing. NSD does that. I think that part of Delhi does that to you. So I'm not going to talk about it either because then it'll just become about the two of us. Unless
either one of the But three in the of you. film, since we are talking about food, she sells donuts. Yes. Donuts. You know, so इस film में the person whose character is the most ambiguous, who I'm constantly wondering कि ये क्या role play करे, is yours. Because his role is fairly well explained in the trailer, and Nina G's role is very well explained. Yours just makes me curious. You are the. Because you're like, it's so good to see you. You guys are so amazing. As I should make everyone curious. Yes. My character's name is Sia. She's this bright, bubbly, independent, half Indian, half American girl living in Pennsylvania. Was the area where they met us, so that's where I'm living. And I have this amazing boyfriend, who his name is Cinnamon Singh. And we are so in love. We want to get married, but we're having some issues there because my parents are not approving. Because my So there are parents in America also which don't approve of. Especially if the bridegroom is an Indian. मैं वही कहने वाली थी, कोई देसी एंगल तो होगा ही वहाँ दे दो. तो सिनेमन जी आप क्या करते हैं फिर इसके बारे में, इस पिक्चर में? इस पिक्चर में इसके बारे में मैं तो यही करता हूँ, सबसे पहले तो ये मिल गई है, वही सबसे बड़ी बात होती है. इनको पाने के लिए मैं मतलब 2-2 डब्बे के डोनट्स खा लेता हूँ ताकि ये बार-बार डिलीवर करने के लिए आए. Oh, is that right? Yeah. I actually had someone come on the show and make a confession. So my show is about confessions as well. कि मेरा पिज्जा डिलीवरी गाय बहुत क्यूट है, तो मैं अब दिन में ना I've been having 3 pizzas a day और अब मैं मोटी हो गई हूँ. So yeah, she's a bit big and that was really hilarious. अपना तो भी आपके same साथ story है. तो मैं वैसे एक गैस स्टेशन चलाता हूँ, पेट्रोल पंप, क्योंकि यहाँ पे गैस को कुछ और बोलते हैं. Exactly. यहाँ गैस वो होती है जब बहुत छोले भटूरे खा लेते हैं. ज्यादा हो जाते हैं तो गैस स्टेशन खुल जाता है. अच्छा, so गैस स्टेशन है और आई एम एन एस्पायरिंग सिंगर, इसीलिए मेरा नाम सिनेमन सिंह है क्योंकि मैं हनी सिंह का फैन हूँ. तो जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह. this movie is like going to be so fun. And then he has no parents and the condition, नरगिस सिया के पेरेंट्स की कंडीशन होती है कि तुम हमें अपने पेरेंट्स से मिलवाओ. तो इसके पास तो पेरेंट्स इसके पंजाब में रहते हैं, तो ये हमको नौकरी देता है और कहता है एक शर्त पे दूंगा, तुम पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स बन के इसके घर पे जाओ. That makes so much sense. हाँ, तो वो पड़ा वहाँ बड़ा one of my favorite scenes है. This is exciting. वो जो डिनर है ना हमारा, वो हाँ. सारे You know अतरंगी लोगों. what my favorite scene, at least in the trailers, is where Nina G is going to a bowling alley and she's wearing the sari and she's trying to like bowl in that. That's a very fun sequence. है ना? गाने का पोर्ट और पोर्ट. स्ट्राइक होता है full. It's so cool. That was good. Okay, so since you're an expert, period, not veteran, expert, period. Okay. Since you've seen so much life in India outside and both of you are in a relationship in the movie and it's so complex, safe to say I can ask you जो मेरे पास DM से questions आए हैं. So Nargis, you take the first one because ladies first. And then in turn you can tell me that one thing you know how to say in Hindi. You want me to say? Yeah, I want you to say. It's not the one thing I know how to say. It's the thing you want me to say. It's the thing I want you to say. But after you're done answering this question, okay? So Shivam has sent this question and he said, my parents have been my role model when it comes to a successful love life. Parents की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है. But I feel कि पिछले कुछ सालों में my parents have lost the spark between them. And it makes me unhappy to see that 30 years they were amazing and now they kind of not into each other. How do I help them get the spark back into their life? Actually, you can all... I wouldn't know that because I haven't been in a relationship that lasted that long. That's you have not sold I don't donuts have- also, but you're selling. Yeah, I exactly. have sold donuts. Good one, Anupam. you have? Yeah. Then you answered this question. Yeah, I think it might be a question for you. I think we can say our movie is a good example. A good road trip would fix a lot of new things. Yeah. Oh yeah, wait Go a on minute. go on an Actually, adventure. You know what? Let me tell you, he should go on Gottman Institute. It's a lovely couple that runs this institute about therapy and relationship psychology, and they often say is that you have to find something new about your partner every day, even if it's a new freckle or a new whatever. You want to be excited about your partner, find something new about them that you can appreciate and do something new with them. But ये सही बोली, but ये रोड ट्रिप का है. मेरा एक दोस्त है जो नौकरी का जो बहुत अच्छे होटल में आगरा में GM थे और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारा ज़्यादा, तो वो अभी रोड ट्रिप से आगरा टू गोवा गए हैं.
Man, that's so cool. Yeah. 5 Wow. days. They said we Wow. decided हम रास्ते में रुकेंगे और Unplanned. that's I good. think that's amazing discovery. Yeah. It's adventurous. Do something new together. And Yes, my adventurous, parents were yeah. married for 59 years. 59 years. Long time. So and आदत हो जाती है. You know, it's like a habit. You're habitual to somebody screaming at you also. Why are you not done this? That's also like a habit. Yeah. And I can imagine. So my father used to bring. He was a very kind man. So he used to pick up eggs or sabzi and रास्ते में. And this was after they were married for about 35 years. And रास्ते में जो भी कोई मिलता था और बोलता था पुष्कर नाथ जी क्या लेके जा रहे हो? अंडे लेके जा रहा हूँ. अच्छा चलो 6 आप रख लो. You will give it 6 to the other people. सब्जी लेकर जा रहे हो, bread लेकर जा रहे हो, चलो आप रख लो. One day he decided to get lipsticks, 2 lipsticks for my mother. So one lady, Mrs. Malhotra, met him कि क्या लेके जा रहे हो? He said अच्छा चलो आप ले लो. No. And he said this to my mother. He said अभी लेकर आओ वापस मेरे lipstick. Cannot do that. I remember that there was a major mess in the house. Disaster. My father was innocent. He did not know. He said मैं कैसे भी मर. कहती मुझे नहीं पता घर ना मत आना अंदर. लिपस्टिक कैसे दे दी तुमने किसी को? Exactly, lipstick कैसे दे दी? But that's actually really cool. I think that if I were ever in a long-term relationship, I would really enjoy it if somebody after 30 years of being married got me a lipstick. Yeah. Sure, even if it was a color I never wear. That's fine. Everything is nice. Little gifts, anything, right? Yeah. What did we do in the beginning when we meet someone? All try to do that again. Recreate the first Yeah. couple of dates. That's a great idea. Sharib, आप ही ने सिर्फ inputs नहीं दिए. मेरी अभी शादी को 20 साल होने वाले हैं इस साल, तो मैं Wait, भी what? काफी What? बाल भी हुआ है ये इनका? तो अपनी बेगम के बारे में मेरी बेगम- ये बार-बार बात करते रहते हैं. बहुत सबसे इंस्पायरिंग है इनकी लाइफ में बेगम. बहुत अच्छी बात हाँ, करती है. मैं क्योंकि मेरी लाइफ में उन्हें बहुत काफी मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं और उन्होंने मेरे हर फैसले को मतलब हमेशा सपोर्ट किया है और सारी मुश्किलों में उन्होंने मेरा साथ दिया है और मतलब घर बेच दिया हमने, जेवर गहने सब बेच दिए और उन्होंने कभी उफ नहीं की कि यार ये क्या पागल जैसा एक्टिंग कर रहा है, तू पागल हो गया क्या. उल्टा मैंने एक बार उनको बोला कि यार ये इतने सालों से कर रहा हूँ मैं, स्ट्रगल वगल कर चल रहा है, एक्टिंग के ऑडिशंस हो रहे हैं लेकिन एक काम नहीं मिला यार, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. तो उन्होंने बोला कि यार आज तुमने ये बात बोली है, दोबारा ऐसे रिपीट मत करना क्योंकि तुम्हारे साथ 3 साल हम भी वो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं और अगर आप ये बोलोगे कि तुमने गलत डिसीजन लिया है तो इट विल ऑल बी फॉर नथिंग. How wonderful. I got goosebumps. बहुत उन्होंने बोला कि तुमने कोशिश की, सबसे अच्छी चीज ये है कि तुमने कोशिश की, कम से कम आगे जाके ये मलाल नहीं रहेगा कि तुमने कभी कोशिश भी नहीं की. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आपस में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो मगर जब फैमिली पे प्रॉब्लम आए या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू स्टैंड देयर लाइक अ रॉक विद देम. मुझे किरण ने बहुत अच्छी एक बात कही थी एंड आई वाज वेरी मूव्ड बाय इट. उसने कहा तुम्हें बहुत गलतियां हैं, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हैं मगर तुम फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तुम ऐसे खड़े हो जाते हो वॉल की तरह. दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. That's I think is a very beautiful thing to say. Yeah, because even your relationship with Kiran ma'am is honestly very inspiring. Yeah. Because you look at it and you're like, these are two people who have such exciting lives, right? It's Yeah. so easy कि उन exciting life में बह जाना. But also I married my best friend. तो हमारे शादी में बेशक उतार चढ़ाव आए मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप बरकरार रही है. आई थिंक कपल्स नीड टू कीप दैट फ्रेंडशिप अलाइव. इफ द gentleman who is asking this question, he needs to tell his parents remain friends because in friends that nobody judges. Yes. In relationships you judge Yes. each other, but friendship में you don't judge. आपकी Actually, क्या this- सजेशन होगी उनको? I would honestly tell them the same thing. You know, I think also if you do things, pick up a new hobby together, like I don't know, say French, and my boyfriend doesn't know French, and if we're doing it together, we're struggling the same amount. He's teaching me something he picked up in the class. After I 1 year didn't. you will fight in French. Right, which I love. Imagine, and here's the other thing. You can What's your phone thing? कुछ squish and Chinese. अगर आपको एक भाषा इकट्ठे आती हो ना, जैसे मेरी नानी और मम्मी करती हैं,
they know this really weird language. They do this pish pish pish. They add like one. यहाँ Some- कसमा कसमा रस्मा वही मेरे को आसमा था इस तरह बोस बोलना this. They add that so people can understand it. Right? Understand it, yeah. So- P like P Big language language. The P Yeah, language. big language, yeah. हाँ, so They add P to everything. if you're like learning French together and after a फ्रेंच के year. पीछे पड़ गई हैं नहीं, आप सोचिए ना कि 1 साल के बाद अगर आपको किसी का कलेक्टिवली मजाक उड़ाना है हाँ। तो ये भी एक बॉन्डिंग है ना हमारी कि फिल्म में ये भी एक सीन है हाँ, ये भी है। हमारी फिल्म में रियली ये भी एक सीन है मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ने जाता हूँ वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बात करता है जो हाउडी बोलता है हाउडी एंड वो मुझे समझ कहता है तो मैं कहता हूँ ये कौन सी अंग्रेजी बोलता है कहता डैड व्हाट इज ग्रैंडफादर व्हाट इज तू हिंदी सीख हिंदी ताकि हम किसी की बुराई तो हिंदी में कर सकते हैं कि नहीं मैं फ्रेंच के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ी हूँ कि नहीं आपका हेयर कट बहुत आज इस समय वैसा कुछ है ना फ्रेंच टाइप है Very French. isn't that very French haircut you have do you think I'll get a movie in France to do? of course कुछ भी हो सकता है Actually कुछ भी हो सकता है. Yeah. That's true, you never know. My mom went to college with Looking me. for a friendship. That's so funny. So I had thought that you know, like I'll ask so many questions, but बातों में से इतनी सारी बातें निकली हैं that we could do this all night long, but these wonderful people have to go. I wish you all the best with आप the देखेंगे movie. हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे में से किस दिन देख रहे तीनों हैं दिन. Ooh. सच I swear. And I don't even watch Swear in movies. French. I just know one word in French. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank I you. should say merci beaucoup. मैं तीनों दिन देखूंगी. Please. And I'm not lying. I'm not even a movie आपको watcher. अच्छी लगेगी I know that. आपको मजा आएगा आप मम्मी के साथ रहती हैं My mom, my dad, my तो brother. पहले दिन आप अकेले देखो दूसरे दिन आप मम्मी के साथ देखो तीसरे दिन तीनों देखो तीसरे दिन बॉयफ्रेंड के साथ देखो. बॉयफ्रेंड के साथ देखो ठीक है मजा आएगा Nargis had to say something to me. Oh my god. In Hindi. That was supposed to. I was no. अरे बहुत अच्छा हिंदी Sad. बोलता है नहीं एक है sentence बोला, ये क्या बोल रही है पता मुझे हिंदी में. She just wanted me to say that to her. आपकी शक्ल बहुत सुंदर है. Thank you, Nargis. Right back at you, darling. Right back at you. Thank you so much. I'm wooing all the ladies this evening. Thank you.